Yes, a very good morning to all of you. So we were revising lines and angles, and 5.1 we have finished, right? So today we'll start with the revision of 5.2. And before that, let us discuss the angles that we are going to apply in exercise 5.2, right? In exercise 5.1, we have discussed the angles which are on a straight line, supplementary, linear pair. We discussed the angle which form 90 degree, complementary angle. We discussed the angles formed by intersecting lines, right? We discussed the angles which are made by a line, a straight line and a ray, right? So now for exercise 5.2, we will discuss the angles which are formed by parallel lines. For 5.2, we will discuss the angles which are formed by parallel lines. For 5.2, we will discuss the angle which are formed by parallel lines. So let us see. These are two parallel lines L and M, and there is a transversal which passing through the two lines, and that is, I name it as N, right? Now you see, we have defined parallel lines. What are parallel lines? The lines which can be extended to both of the sides and they never meet. Moreover, distance between them remains the same. Lines के बीच में distance जो है वो same रहे, but when we produce them, they should not meet. Lines meet नहीं करनी चाहिए, जबकि उनके बीच का जो distance है वो same रहना चाहिए. ठीक है? So in case of parallel lines, we have discussed so many types of angles. Let us recall them. This is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, 8. So I marked 8 angles which are formed on this parallel line by this transversal. इस transversal line ने इन parallel lines के around जो है वो 8 angles describe here, right? So let us firstly discuss alternate interior angles. What are alternate interior angles? When we are talking about alternate interior angles, then we have to see the interior portion of the lines. This is the interior portion of the lines. We have to look at this when we are talking about alternate interior angles, right? So first of all, they should be interior. As you can see on the board, they are interior, and moreover, they should be alternate. Alternate कैसे? This is 3, 3 के alternate 8. This is 4, 4 के alternate 5. So what are the pair of alternate interior angles? 3 and 8, and second one is 4 and 5. These are pair of alternate interior angles, and we should know that in case of parallel lines, alternate interior angles, they are always equal. That means we should write that here angle 3, this is equal to angle 8, angle 4 is equal to 5 in case of parallel lines. Parallel lines के केस में alternate interior angles, they are equal to each other. Is it okay? चलिए second. Alternate exterior angles. Alternate exterior angles. If we are talking about alternate exterior angle, we will look at the exterior part of the figure. These are the exterior part of the figure. This is the exterior part of the figure. Now we need alternate exterior. एक तो exterior हो
और साथ ही साथ ऑल्टरनेट भी हो, कौन से बनेंगे? 2 and 7 and the second pair is 1 and 6. And you know, in case of parallel line, alternate exterior angles are equal. So you will write here angle 2 is equal to angle 7 and angle 1 is equal to angle 6. क्या लिखोगे? Alternate in case of parallel lines. In case of parallel lines, alternate exterior angles, they are always equal. So you should know where the alternate interior angles lie. What are those? What is their meaning? And where the alternate exterior angles lie. What are those and what is its meaning? Right? Chaliye, next. Third is co-interior angles, which are also known as interior angles, which are also known as interior angles on the same side of transversal, which are also known as interior angles on the same side of transversal. Co-interior angles, you know, all of us, we have traveled through train once upon a time or once in life, right? So, you know, the person who is sitting just adjacent to you in train, that person is called your co-passenger. Usko kya bolte hain? Co-passenger. Now, co-interior angles. Interior angles on the same side of transversal. This is transversal. This transversal is having two sides. One side is right side. Another side is left side. According to the definition, co-interior angles should lie on the either side, on the same side of transversal. That means they can lie on the right side of transversal or they can lie on the left side of transversal. Is it okay? They can either lie on the right side of the transversal or they can lie on the left side of transversal. Moreover, they are interior. तो आप बताओ मुझे राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ट्रांसवर्सल की राइट पे 4 and 8. They are co-interior angles. So we will write here 4 and 8. And left side of transversal पे कौन से हैं? 3 and 5. They are co-interior angles. That means interior angles on the same side of transversal. And you know, in case of parallel lines, co-interior angles, that means interior angles on the same side of transversal, they are always supplementary. इनका sum क्या होता है? 180. Co-interior angles in case of parallel lines, their sum is always equal to 180 degree. In case of parallel line. Is it okay? राजार्य नहीं पता चला? Co-interior, same side of transversal, 4 and 8. And this is same side of transversal, inside and same side of the transversal, 3 and 5. Right? And moreover, they are supplementary always. Co-interior on the same side of transversal are supplementary always. कैसे supplementary? Their sum is 180. 4 plus 8 is 180 and 3 plus 5 is 180. Okay. Next, I am defining co-exterior angle. Co-exterior angles. Now, they will be exterior
and they will be on the same side of transversal. That means वो right side of transversal हो सकते हैं और left side of transversal भी हो सकते हैं. Exterior and on the same side of transversal. अब right side के transversal के right side पे exterior angles कौन से हैं? 1 and 7. And transversal की left side पे 2 and 6. And in case of parallel lines, as we have done that co-interior angles are supplementary, so are co-interior angles. Co-interior angles भी in case of parallel lines supplementary होते हैं. ठीक है, चलिए. 1 plus 7 is equal to 180. 2 plus 6 is equal to 180. नीचे लिख दो in case of parallel line. In case of parallel lines, these are co-exterior angles and these are co-interior angles, right? अब हमारे रह गए एक और टाइप होती है एंगल की, corresponding angles. So let us see corresponding angles. Question number 4. Type number 5. Corresponding angles. So we are talking about corresponding angles. What are corresponding angles? Let me tell you. You know, the persons who are not in this world, हम कहते हैं कि वो ऊपर चले गए और हम लोग नीचे हैं, है ना? यही कहते हैं ना हम सिंपल लैंग्वेज में. एक लेमैन की जो थ्योरी है, जो पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहता है? दैट जो पर्सन चले गए वो ऊपर चले गए और जो है वो धरती पे हैं. जो ऊपर वाले हैं वो आपस में बात करेंगे और जो नीचे वाले हैं वो आपस में बात. ऐसा कभी होता है कि ऊपर वाला बंदा नीचे वाले से बात करे, फिर हम कहेंगे भूत आ गए, है ना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना, बातचीत करना. ऊपर वाले ऊपर वालों के साथ बातचीत करेंगे और नीचे वाले. अब ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे मुझे बताओ लाइंस के ऊपर ऊपर कौन से एंगल्स हैं? ट्रांसवर्सल की राइट पे 1 and शाबाश 1 and 8 एक साइड पे देखना है. 1 and 8 वो लाइन के ऊपर ऊपर है. तो पहला पेयर बना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का 1 and 8. और इन्हीं लाइंस के नीचे नीचे कौन है? 4 and 7. इन्हीं लाइंस के नीचे नीचे कौन है? 4 and 7. And you know, in case of parallel lines, corresponding angles are, बोलो, in case of parallel lines, corresponding angles are equal. जैसे alternate interior equal, alternate exterior equal, तो corresponding भी क्या है? Equal. Write down. 1 is equal to 8. 4 is equal to 7. In case of parallel lines, corresponding angles are equal. In case of parallel lines, corresponding angles are equal. Right? Is it okay? Chaliye. Next is, now you see on the left side of transversal also there are some angles which are above the line. कौन से हैं left side पे? Angle 2 and angle 5. और नीचे नीचे 3 and 6. And in case of parallel lines, corresponding angles are, बोलो अभी तो बताया, equal. That means 2 is equal to 5 and 3 is equal to 6. In case of parallel lines. In case of parallel lines, corresponding angles are equal.
अब हमने क्या सीखा? इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इतना कुछ हमने पैरेलल लाइंस के केस में सीखा, और इनमें से अगर एक भी चीज होल्ड नहीं करती, देन वी से दैट द लाइंस आर नॉट पैरेलल, द लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर इन सारी चीजों में से एक चीज भी गलत आ जाए, मतलब एक चीज भी होल्ड ना करे, कि हो सकता है किसी लाइन के केसेस में, दो लाइन के केसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ना आए, हो सकता है दो लाइंस के केसेस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल ना आए, हो सकता है दो लाइंस के केस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल ना आए, हो सकता है दो लाइंस के केस में को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री ना आए। अगर इनमें से कोई एक भी बात होल्ड नहीं करेगी, ओनली इवन वन, then we say that the lines are not parallel, then we say that the lines are not parallel. Is it okay? So these are the types of angles which are needed for the next exercise. Look at page number 104, page number 104. Page number 104. Look at page number 104. Try these. 104 page पे आपके पास कुछ try these हैं. Let us try them. Give some examples of parallel lines from your surrounding. Parallel lines from your surroundings. अपने आसपास की दुनिया में से parallel lines के example दो. Railway tracks, or anyone? Horizontal edges of blackboard. These are horizontal edges. This is horizontal edge and this is also horizontal edge, and you know they are parallel to each other. Horizontal edges of blackboard, they are also parallel to each other. Okay, some more you can construct. Next, find the angle made by intersecting line at the vertices of equilateral triangle. Second, try this. This is equilateral triangle. इसके वर्टिसेस पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती हैं. We are having intersecting lines at the vertices of the triangle. ट्राइंगल की वर्टिसेस पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, दिस वी वांट टू टेल. You know each angle of equilateral triangle is, each angle of equilateral triangle, those sitting over here, tell me, Raj, Aryan. Each angle of equilateral triangle is, आप बताओ बेटे. Each angle of equilateral triangle is इक्वल तो होते हैं, वैल्यू क्या होती है सबकी? विद्यार्थी सेज इक्वल, वो तो पता है इक्वल. व्हाट इज द वैल्यू? $60. इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल 60 डिग्री. सो वर्टिसेस पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, एंड एट इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस, इट कम्स आउट टू बी कितना डिग्री? 60 डिग्री. Angles made by intersecting lines at the vertices of equilateral triangle, this is 60 degree. Is it okay? चलिए next. Draw a rectangle and tell the angle which are made by intersecting lines at its vertices. First of all, we'll draw a rectangle. These are its vertices.
At the vertices, vertices means corner, corner of the figure, it is known as vertex. Plural में vertices, जैसे knife का plural knives होता है, वैसे ही vertex का plural vertices होता है, right? At the vertex intersecting line, see ये बनी, इधर से ये बनी, इधर से ये बनी, इधर से ये बनी, वर्टिसेस पे कितने डिग्री एंगल बना? एनीवन? कोई बता सकता है रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री. राज आर्यन फ्रॉम 7th A टेलिंग द राइट आंसर. दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस पे angle made by the intersecting lines at the vertices of rectangle, it is 90 degree. 90 degree. Angle made by the intersecting lines at the vertices of rectangle, this is equal to 90 degree. Next question. Try this का fourth question. If two lines intersect, they always intersect at right angle. If two lines intersect, they always intersect at right angle. देखो जरा, I made two intersecting lines. They are intersecting at right angle, but I can make the lines in this way also. This time they are not intersecting at right angle. ये right angle पे नहीं intersect कर रही, तो जरूरी नहीं है कि intersecting lines हमेशा right angle पे ही intersect करेंगी. They can intersect at some different angle also. ये जो lines हैं वो different angles पे. Look at page number 105. 105 page. Try this. Page number 105. Try this. 105 page. Try this. Suppose two lines are given. How many transversal can you draw for these lines? We are given two lines. Suppose we are having two lines. इसके लिए हम कितनी ट्रांसवर्सल प्लॉट कर सकते हैं? Because on a line there are infinite many points. अब यहाँ तो आपको लाइन इतनी छोटी सी नजर आ रही है, बट लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है. लाइन जो है वो कभी खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब लाइन पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होगी. इसका मतलब फॉर टू लाइंस वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी ट्रांसवर्सल्स. सो योर आंसर विल बी infinite many transversal. नहीं बेटे, ये 105 पेज का ट्राई दिस का फर्स्ट है. पेज 105 ट्राई दिस first. So infinite many transversal can be drawn for two given lines. Infinite many transversal can be drawn from two given lines. Is it okay? For two given lines, we can draw infinite many transversal, because on line there are infinite many points. From every point you will draw a transversal. So from for two lines, we can draw infinite many transversal. Next, try this for second. Try this for second. If a line is transversal for three lines, there are three lines and there is a transversal. There are three lines, LMN. There is a transversal P.
if there is a transversal line to three lines, at how many points it will intersect the lines? कितने points में intersect करेगी? 1, 2 and then 3. It will intersect the three lines at 3 points. बेटे मुझे बुक देना, बुक का पेज पता हुआ है, बुक पेज टेयर्ड ऑफ है बुक का। देखो उसने कितनी अच्छी हमें बात बताई। कहता अगर लाइन टी शेप की हो, अगर हम इस लाइन में से टी शेप लें तो टी शेप 2 लाइन, अगर हम यहाँ पे टी शेप लें तब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं, है ना। और अगर हम इन लाइंस पे जेड शेप बनाएं, अगर हम इन लाइंस पे ऐसे जेड शेप बनाएं तब कौन से एंगल्स मिलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, टी शेप से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड जेड शेप से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी गौरीश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? गौरीश मैम को मैंने बताना था कि सक्षम 10th भी हमारी क्लास में ज्वाइन किया था, वो लीव कर गया अब। और बच्चों का एक्चुअली पीरियड शुरू होने वाला है ना 10th वालों का, मे बी इसलिए। हाँ जी हरमीत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? दोबारा समझा दो मैम, मैं नेटवर्क चला गया था। कौन सा क्वेश्चन? विच क्वेश्चन हरमीत? क्वेश्चंस तो अभी शुरू ही नहीं किए, मैं ट्राई दिस करवा रही हूँ। यू टेल मी विच वन आई शुड एक्सप्लेन वंस अगेन। हाँ जी हरमीत। मैम ट्राई दिस का मैम, ट्राई दिस का मैम कौन सा? ट्राई दिस पेज नंबर 105 ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन। मैम मैं नेटवर्क चला गया। If a line is transversal to three lines, at how many points it will intersect them? If a line, it is transversal to three lines, at how many points it will intersect them? It will intersect them at 3 points. 1, 2, 3. If a line is transversal to three lines, it will intersect them at how many maximum points? 3 maximum points, right? So this is all about the angles which are related to parallel lines and the relation between them. Certain try this we have done. If you want to ask something, you can ask, because exercise I think I should start should not start today because hardly 2-3 minutes are left. कुछ हम वो कर लेते हैं try this वगैरह. Look at page number 109. Try this. Page number 109. Try this. मैम पेज 109। हाँ जी 109. L and M are parallel. L and M, they are parallel. And T is transversal. This is 60, this is X. सबसे पहले आप ये देखो जो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं उनपे शेप कौन सी बन रही है। देखो जरा इधर देखो, लुक एट द बोर्ड। Which shape? Z shape.
और Z शेप पे कौन से एंगल्स होते हैं? Alternate interior angles. Interior angles And in case of parallel lines, alternate interior angles are always equal. equal. So you will write here x is equal to 60. This x, this is equal to 60. Bracket में लिखो alternate interior angles. In bracket, you should write alternate interior angles. X is equal to 60. Alternate interior angles. Right? Yes, ma'am. Look at the second part. Second part is A and B are two parallel lines. And there is a, chalo, we'll continue tomorrow. Bell has gone. So tomorrow is Sunday. Enjoy your holiday and complete your work, send your notebooks. Right? Bye bye.